वर्ड समझ ले, बिकॉज एक बारीकी में जाके जब उस वर्ड का तज्जिया करता है, मेरे बोलने में या उसके समझने में या नॉइस या किसी भी वजह से उस वर्ड को मिसक्लासीफाई कर सकता है। तो जो ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन होती है उसमें एरर्स होते हैं। और अगर आप इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज की ट्रांसक्रिप्शन करना चाहें तो ये काफ़ी तल्ख तजर्बा साबित होता है। फॉर एग्जाम्पल, एट वन टाइम वी वर ट्राइंग टू ट्रांसक्राइब द उर्दू लैंग्वेज, यानी मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि उसको ट्रांसक्राइब कर दे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। सो फॉर एग्जाम्पल, गूगल इज प्रोबेबली द मोस्ट एडवांस्ड इन जनरल इन दिस रिगार्ड, लैंग्वेज प्रोसेसिंग के मामले में। सो लाइक हमने गूगल के क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चीज़ करने की कोशिश की। हमने उसको ऑडियो दी और उसे कहा कि तुम इसको, ये उर्दू में है ऑडियो, तो इसको ट्रांसक्राइब कर दो। अरे वॉज ऑफुल। सो लाइक इट लिटरली गॉट अब्यूसिव, यानी ऐसा लग रहा था कि अभी ये बाहर निकल के हमें गालियाँ भी देगा, ये है तो तुम ये कह रहे हो तो तुम बोल रहे हो, नॉट इन रिपल्शन बट जस्ट नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड। लेकिन स्टिल उसको चूंकि प्रोसेस करके कोई जवाब तो देना है, तो कोई ना कोई जवाब वो आपको देता है, लेकिन वो भयानक हद तक हकीकत से। सो लाइक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्रांसक्रिप्शन काफ़ी मुनासिब हद तक अब हो जाती है, लेकिन अदर लैंग्वेजेस के अंदर सिस्टम अभी भी इतने एडवांस नहीं है कि वो अच्छे तरीके से ट्रांसक्रिप्शन कर सके। सो इस एप्लीकेशन को हम कहते हैं स्पीच रिकग्निशन। देन लैंग्वेज ट्रांसलेशन, आप इंग्लिश से स्पेनिश में, स्पेनिश से फ्रेंच में, फ्रेंच से इटालियन में, इटालियन से उर्दू में, उर्दू से हिंदी में, एंड सो ऑन सो फोर्थ। किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन कर सकते हैं। एंड ट्रांसलेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। सो हाउ डज इट हैपन, लाइक हाउ इज इट सुपरवाइज्ड लर्निंग? हम किसे कहते हैं? जिसमें हमें सवाल और जवाब दोनों पता होते हैं। सो हाउ इज इट like supervised learning? So what it does is, for example, फर्ज करें कि एक अखबार है, न्यूयॉर्क टाइम्स या कोई भी अखबार है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। फर्ज करें वो रोज़ 3, 4 या 5 मुख्तलिफ लैंग्वेज में शाया होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, उसकी एक कॉपी इंग्लिश में है, उसी की एक कॉपी फ्रेंच में है, और उसी की एक कॉपी स्पेनिश में, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को देते हैं कि देखो भाई, ये अंग्रेजी है, ये इसकी फ्रेंच कॉपी है, ठीक है, जरा समझो। अब बेसिकली उसने वर्ड्स की ट्रांसलेशन नहीं करनी, उसने इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स देख के ये अंदाजा लगाने की कोशिश करनी है कि जहां अंग्रेजी का ये वर्ड यूज होता है ना, वहां फ्रेंच का ये इस्तेमाल हो रहा होता है, या जहां अंग्रेजी के ये 2 वर्ड यूज होते हैं वहां फ्रेंच का ये 1 वर्ड यूज हो रहा होता है। सो इस किस्म की मैचिंग के जरिए ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा होता है कि पॉसिबल ट्रांसलेशन क्या हो सकती है। इट्स नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ लाइक डिक्शनरी लिटरली इन द सेंस, बिकॉज दैट बिकम्स ट्रिकी। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल, अगर हमारी इनपुट है, एक ऐड है हमारे पास और यूजर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, और हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि क्या यूजर इस ऐड पे क्लिक करेगा या नहीं, राइट? आजकल जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके अंदर ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यू मे नॉट रिगार्ड इट एज अ वेरी लाइक लाइकेबल एप्लीकेशन, बट स्टिल इट इज़ लाइक generating a lot of revenue for people. That is called like online advertising. So like मैं एक यूज़र हूँ और मेरा कुछ डेटा किसी भी लाइक सर्विस प्रोवाइडर के पास है, और उसकी बुनियाद के ऊपर उसको ये प्रोडिक्ट करना है कि ये बंदा इस ऐड पे क्लिक करेगा या नहीं करेगा। सो लाइक वो मुझे ऐसा ऐड दिखाना चाहेगा जिसका इम्कान ज़्यादा हो कि मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा, बिकॉज दैट्स वेयर द रेवेन्यू लाइज। सो लाइक प्रोडिक्टिंग दिस थिंग दैट like we are able to show those kind of ads to a user which are more likely to be clicked is going to generate revenue for people. So that is also the task of machine learning, right? आपने देखा होगा, like आप Google में सर्च करते हैं, फर्स्ट करें जी हमने एक गीज़र लेना है, आपने Google में लिखा, सर्च किया, और उसके बाद Facebook खोली तो Facebook पे गीज़र का ही ऐड आ रहा, right? Why? Because like it's your information being fed to the algorithm. वैसे वो कहते हैं कि हम आपका डेटा प्राइवेटली बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, they don't. Okay, then for example, we could have as input the images and radar info, and we could use that to like predict the position of the other cars or other objects. For example, एक सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि जब वो एक रोड के ऊपर जा रही है तो वो इर्द गिर्द के सारे ऑब्जेक्ट्स को रिकग्नाइज कर सके,
उनसे फासले को रिकग्नाइज कर सके और उसकी बेसिस के ऊपर इस सेफ्टी मार्जिन को तय कर सके कि जिस स्पीड पे वो जा रही है वो स्पीड पे जा सकती है, या उसको स्लो होना है या फास्ट होना है या व्हाटएवर. So it's a lot of information that it needs to process from about the surroundings, right? So that is also an example of supervised learning. And then for example, आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो रही है, that is the replacement of manual inspection on the production lines. So आपने देखा होगा फैक्ट्री के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर कोई मटेरियल है, वो मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो कोई मेडिसिन है, वो कोई भी चीज़ है जो मैन्युफैक्चर होके पैड से कन्वेयर बेल्ट से बाहर आ रही है, ठीक है. सो होता क्या है कि वहाँ पे विजुअल इंस्पेक्शन के लिए लोग मौजूद होते हैं, वो फॉल्टी आइटम उठा के साइड पे कर देते हैं, बाकी पैकिंग साइड पे डालते जाते हैं. नाउ दिस थिंग इज बीइंग डन बाय machine learning. So the visual inspection has also been given to like machine learning algorithms. So there are like cameras, specialized cameras, which are monitoring all the material which is being manufactured by machines, and like if there is any like fault, तो मेडिसन है अगर, तो उसकी कलर के अंदर, उसकी कॉम्पोजिशन के अंदर, या फॉर एग्जांपल उसकी जो अपीयरेंस है या शेप है, उसके अंदर कोई भी चीज़ उसको फॉल्टी नजर आती है तो उसको फ्लैग कर देती है, नो इट इज टू बी टेकन अवे. Similarly, for example, for cell phones and all these things. So visual inspection is also being done by supervised learning algorithm. Now this is a simple example that we saw last time as well. This is an example of house price prediction. House price prediction. Usually, like whenever people start to learn about machine learning, this is probably a very common start point for most people to like begin with house price prediction. So house price prediction में हमारे पास input variable के तौर पे घर का size है. So on x-axis you see house size in square feet, right? And on y-axis we have price of the house in thousands of dollars, right? So what we want to do is, based on the size of the house, we want to predict the price of the house. Based on the size of the house, we want to predict the price of the house. अच्छा, अब ये जो आपको क्रॉसेस नजर आ रहे हैं, रेड क्रॉसेस, ये रेड क्रॉसेस वो एग्जाम्पल्स डेटा है जो हमारे पास पहले से मौजूद है. मिसाल के तौर पे जो सबसे नीचे आपको क्रॉस नजर आ रहा है, दैट इज सेइंग कि हमारे पास कोई घर है जिसका एरिया तकरीबन 400 या 450 स्क्वायर फीट है और उसकी कीमत तकरीबन 70,000 या 75,000 डॉलर है, राइट? मेक सेंस? सिमिलरली यू सी लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 क्रॉसेस हैं. हर क्रॉस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन पे मिलेगा और वो ये बता रहा होगा कि इस साइज के घर की कीमत इतनी है, right? So you understand this chart? Okay. Now if we have these examples available which are basically telling that ये घर का साइज है और ये इसकी प्राइस है, अब इसका फायदा क्या है? अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे ये कुछ एग्जांपल्स हैं तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा बेसिकली ये है कि अगर हम अपने घर की कीमत का एस्टिमेट लगाना चाहते हैं खरीदने के लिए या बेचने के लिए, so for example we want to sell our house and we go to a like sales agent and we say that we have a house of this size, can you like give me an estimated price for which I will be able to sell it? या अगर आपको किसी एरिया के अंदर कोई घर खरीदना है तो आप किसी प्रॉपर्टी सेलर के पास जाके ये चीज़ पूछ सकते हैं कि तकरीबन इतने साइज का घर इस एरिया के अंदर कितने में मिल जाएगा. So like this could be a beginner level price estimate for the house. Okay. अब बेसिकली ये प्रेडिक्शन फिर कैसे होगी? अब आपको यहाँ दो लाइंस नजर आ रही हैं. One is a straight line and the other is a bit curvy line. The task of machine learning would be to learn a model based on existing data. The task of machine learning algorithm is to learn a model based on existing data. अब ये लर्न कैसे करता है ये चीज़ हम आगे चल के अनरेवल करेंगे, लेकिन फॉर द मोमेंट हम कहते हैं कि एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हमने इस्तेमाल किया. उसने कहा जी ये जो डेटा आप दिखा रहे हैं ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, इसको देख के यूं लगता है जैसे ये एक लीनियर ट्रेंड है,
कि जैसे जैसे घर का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे घर की कीमत भी बढ़ रही है। सो अगर फर्ज करें ये दोनों लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, फर्ज करें ये दोनों लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती और हमें मैन्युअली अपनी सोच के मुताबिक ये बताना है कि यार बताएं जरा ट्रेंड लाइन क्या है, यहाँ पे ट्रेंड क्या डाटा में पाया जा रहा है। सो फॉर एग्जांपल वन आउट ऑफ यू सेज कि सर मुझे तो यूं लग रहा है जैसे कि जैसे जैसे घर का साइज बढ़ता है वैसे वैसे घर की कीमत भी बढ़ती है, राइट? सो दैट्स अ स्ट्रेट लाइन, as if you're saying that it's very like linear kind of trend, right? Then another one says that yeah, it is true that जैसे जैसे घर का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे कीमत बढ़ रही है, लेकिन ये इतना भी लीनियर ट्रेंड नहीं है, इतना भी स्ट्रेट ट्रेंड नहीं है। मुझे यूं लगता है कि शुरू में ये जरा तेजी से बढ़ता है, उसके बाद ये बढ़ोतरी जरा आहिस्ता हो जाती है। यानी आपने 2 मरले से 3 मरले पे गए तो काफी फर्क पड़ गया, 3 से 4 पे गए, ठीक है, 10 पे गए, फर्क पड़ता गया। लेकिन जब आपने 20 मरले को क्रॉस किया फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद जो घरों की कीमत है वो बढ़ती तो गई लेकिन उस स्पीड से नहीं जैसे पहले बढ़ रही थी। यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? सो दैट सेकंड लाइन व्हिच इज अ लिटिल कर्वी इज इंडिकेटिंग दैट काइंड ऑफ ट्रेंड, राइट? अब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का काम क्या है कि उसने ये ट्रेंड लाइन, उसने ये मॉडल लर्न करना है। इट डिपेंड्स, इट कैन वेरी फ्रॉम एल्गोरिथम टू एल्गोरिथम कि वो एक स्ट्रेट लाइन लर्न करता है इसी डेटा के अंदर या एक कर्व लर्न करता है इसी के अंदर, और इससे फर्क पड़ता है प्रेडिक्शन के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक सेलर के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि मेरे पास 750 स्क्वायर फीट का घर है, मुझे उसे बेचना है, तो जरा मुझे बताओ इसकी तकरीबन अंदाजन कितनी होगी कीमत इस एरिया के अंदर। तो जो पहला मॉडल था which was a straight line, उसके मुताबिक वो मुझे कहेगा कि आपके घर की अंदाजन कीमत $1,50,000 के करीब है, राइट? Whereas अगर मॉडल दूसरा हो जो कि कर्व नजर आ रहा है, उसके मुताबिक वो मुझे कहेगा कि नहीं, आपके घर की अंदाजन कीमत $2,00,000। अब सिंपली प्रेडिक्शन में इट्स जस्ट प्रेडिक्शन, ये बिक नहीं रहा इतने में, सिर्फ प्रेडिक्शन है। अब प्रेडिक्शन में बेस्ड ऑन द मॉडल वेरिएशन हमें $50,000 का फर्क मिल रहा है, which is like 25%, राइट? हम किस मॉडल को बेहतर कहेंगे और किस मॉडल को कमतर कहेंगे ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, लेकिन इन सिंपल टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स मुख्तलिफ तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उनकी अल्टीमेट कंक्लूजन एक दूसरे से कदरे मुख्तलिफ हो सकती है, और जब उनकी कंक्लूजन मुख्तलिफ होगी तो उनकी प्रेडिक्शंस में भी कुछ फर्क होगा। हो सकता है वो प्रेडिक्शंस बेहतर हो किसी कॉन्टेक्स्ट में, और हो सकता है कि वही प्रेडिक्शंस किसी और कॉन्टेक्स्ट में सूटेबल ना हो। तो इस बात को हम हतमी तौर पे फिलहाल नहीं कह सकते कि हम किस मॉडल को कैसे कहेंगे, बट लाइक देयर कैन बी मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस दैट कैन बी मेड इन अ मॉडल। अब यहाँ जो हम वेरिएबल प्रेडिक्ट कर रहे हैं व्हिच इज द प्राइस, इट इज द कंटिन्यूअस वेरिएबल। यू नो प्राइस इज अ कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा, राइट? सो जब हम कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा या कंटिन्यूअस टाइप ऑफ वेरिएबल को प्रेडिक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं regression, right? We discussed this concept as well previously, that whenever we are predicting a continuous number, that is called regression. What can be the alternate to predicting a continuous number? We could have discrete things to predict. For example, what could be an example of predicting a discrete variable? Or a categorical variable, say. A better would be like categorical variable. कोई भी example? Yeah. Yes or no भी हो सकते हैं, लेकिन Yes. Like we just saw the example of spam detection. So the answer to that would be yes or no. Like yes, a spam. No, not a spam. So that's not a continuous quantity, right? So whenever we are using supervised learning and we are predicting a continuous number, that is called regression. Whenever we are using supervised learning and the quantity
or the number or the value that we are predicting is a continuous number, it is called regression, right? So like house price prediction is an example of regression. So regression predict a number where infinitely many possible outputs can be there, right? So like यहाँ आपके पास quantity जो है वो कुछ भी हो सकती है. Okay. So from then on we like focus on categorical outputs. So this was like continuous output. Now we have categorical output. So for example, a very common case is, for example, breast cancer detection. So like that is usually done based on the tumor, and like there can be number of features related to that tumor, but one of the primary features that is used is the size of the tumor. Like there can be also like composition and those kind of things that can be associated with it. But like for example, हम सिर्फ अगर एक input feature लें, and that is the size of the tumor. So based on the size of the tumor, if we try to predict whether this tumor is cancerous or not, हमें predict क्या करना है कि ये tumor cancerous है या नहीं है, right? So there are two discrete labels here. So हम इसको कहते हैं malignant और benign. If like usually अगर आप किसी भी ऐसे मटेरियल की बायोप्सी करते हैं तो यूजुअली जो आपको बायोप्सी रिपोर्ट मिलती है उसमें आपको जवाब मिलता है कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है. बिनाइन का मतलब ये होता है कि ये बेजरर है. मिसाल के तौर पे बॉडी में किसी जगह पे समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ फैट्स इकट्ठी हो जाती हैं. You may have observed it. पाँव के नीचे फॉर एग्जाम्पल you may have observed कि कहीं कोई फैट इकट्ठी हो गई है. हम कहते हैं कि गिल्टी बन गई है यहाँ पे, right? Sometimes it happens like that, right? So if for example you are getting bothered, you may go to the doctor to tell कि जी अच्छा ये मतलब देखें जी ये ऐसे ये कुछ इस तरीके से है, ये something like that. So doctor might say okay it just looks like कि मतलब थोड़ा सा मास यहाँ पे टिश्यू मास यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक है? So like ignore it, it's okay. As long as it is not hurting you, it's okay, right? So like anything like that, which is कोई भी चीज़ जिसको मेडिकल टर्म्स में हम बेज़रर कहते हैं तो उसको हम कहते हैं दिस इज benign, BENIGN, right? Whereas on the contrary, if the biopsy report reveals that no, this is not ignorable, this can be threatening, right? So usually again आप किसी भी बॉडी पार्ट से जो भी चीज़ आप एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं उसके बायोप्सी रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर ही फैसला किया जाता है कि ये benign थी या नहीं थी. So if it is not benign, it is malignant. So the opposite term to the benign is malignant. Malignant का मतलब ये है कि ये बेजरर नहीं है, ये जरर रिसा है. इसका नुकसान का पोटेंशियल, ये नुकसान का पोटेंशियल रखता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, राइट? सो अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक ट्यूमर रिट्रीव किया, अब हम उसका साइज देख रहे हैं. मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ये साइज 2 है, 5 है, 1 है, 7 है, राइट? और बेस्ड ऑन साइज हमने ये प्रेडिक्ट करना है कि ये मैलिग्नेंट है या नहीं, राइट? सो हम इसको 0, 1 कह देते हैं. 0 मीन्स इट इज बिनाइन and 1 means it is malignant, right? So you see कि आपको x axis के ऊपर ट्यूमर साइज नजर आ रहा है, y axis के ऊपर आपको आउटपुट जो कि कैटेगोरिकल है, क्लास है उसकी, whether it is benign or malignant. आप इसे ये भी कह सकते हैं whether it is malignant or not, yes or no, 0 or 1. Simply it's binary classification. इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन, कि हमने क्लासिफिकेशन करनी है और आउटपुट सिर्फ 2 हैं. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट बाइनरी क्लासिफिकेशन, राइट? सो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द ट्यूमर वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट वेदर इट इज malignant or not. Now general trend is that like more often than not the smaller a tumor is, there are more chances that it is benign, right? And bigger the tumor is, there are more chances that it is malignant generally. But you see हमने बीच में 2 एग्जांपल्स ऐसे ब्लू सर्कल्स हमने लाइक जो नॉन मैलिग्नेंट केसेस हैं, बिनाइन हैं, उनको ब्लू सर्कल से, और जो लाइक
मैलिग्नेंट केसेस है उनको हमने रेड क्रॉसेस से इंडिकेट किया हुआ है, ऊपर वाली लाइन को हमने नीचे एक ही लाइन के ऊपर प्लॉट करके दिखा दिया, राइट. सो यू सी दैट ओके फॉर लाइक स्मॉलर ट्यूमर्स इट इज मोर लाइकली दैट दे आर बिनाइन, बट देन यू सी दोस एक्सेप्शंस एज वेल कि आपके पास एक कदरे छोटा ट्यूमर है शुरू में जो रेड क्रॉस के तौर पे आपको नजर आ रहा है, which was not benign, which was malignant, and then a little bigger tumor to that was still benign, and then again one malignant, then again a little bigger tumor than that was still benign. अब जनरल ट्रेंड के तौर पे तो हम ये बात कह सकते हैं that a smaller tumor is more likely to be benign and the bigger tumor is more likely to be malignant, but this is not true for every case, right? There can be situations where a smaller tumor may be malignant and where a bigger tumor may be benign, right? Now the task of the machine learning algorithm is to be able to ultimately predict that based on whatever input. Usually जब हम इस किस्म की चीज़ें कर रहे होते हैं तो there is not just one input, there are many inputs. For example, हम यहाँ सिर्फ ट्यूमर साइज की बात कर रहे हैं, तो ट्यूमर साइज के अलावा और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हो सकते हैं जो इसके अंदर इनपुट के तौर पर प्रोवाइड किए जाएं, which will be leading to a better or more accurate prediction of the status of the tumor. And like classes can be more than two. For example, it could be कि आप जो ट्यूमर है उसको क्लासीफाई जब कर रहे हैं तो आप कहें कि it can be benign or it can be malignant, but the malignancy has further types. So we say like, okay, there is a malignancy of type 1 and there is a malignancy of type 2. Type 1 means that this is this problem A type of problem and this is like problem B type of problem. There can be multiple indicators for that as well. So हमने दो चीज़ों की बात की है सुपरवाइज्ड लर्निंग में अभी तक. We have talked about regression. Regression की बात हम कब करते हैं? जब हमारी आउटपुट क्वांटिटी कंटिन्यूस ना बढ़े, ठीक है. और दूसरी चीज़ हमने बात की है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन मीन्स कि जब हमारी आउटपुट कैटेगोरिकल है, राइट, डिस्क्रीट लेबल्स हैं जिन्हें हमें प्रेडिक्ट करना है. फिर क्लासिफिकेशन के अंदर अगर हमें ज़रा यूजली एटलीस्ट इतनी क्लासिफिकेशन तो होगी जिसमें यस नो कहना पड़े आपको. So that simplest form of classification is binary classification, right? But then you can have multi-class classification as well, where the number of classes that you need to predict are more than 2, and more than 2 could be anything, 8, 10, 15, 20, even sometimes they can be hundreds. So for example, when we are talking about face detection, so like Facebook has like data of billions of users now, right? So there are billions of images. And like it is trying to predict every image correctly. So it's a huge multi-class classification problem in that case, right? Now here you see an example of like a little more twisted, little more tweaked type of like problem for the same classification. So अभी हमने जो पहली example देखी, we were using just one input to the machine learning algorithm, and the idea was to diagnose whether the tumor is malignant or not. Now instead of using one input, we are using two inputs, and the two inputs that we are using are tumor size and age, right? Age of the patient, right? So we see that okay, the way tumor size affects the malignancy of the tumor, the age also has some kind of correlation. We might figure out that okay, as the age grows, the chances of malignancy increase slightly because you are more exposed to different kind of radioactivity and these kind of like things or whatever, right? So generally speaking, for example. So यहाँ आपको नजर आ रहा है कि x axis पे हमने ट्यूमर साइज को ड्रॉ किया, y axis पे age को, right? And again, the benign cases are represented by blue circles, and the malignant cases are described by red crosses. And the idea or the task of the machine learning algorithm here is to come up with a classification boundary that draws a line between these two classes at some point, where the prediction would be कि अगर आपके पास कोई भी नया केस आता है तो आप उसका ट्यूमर साइज और एज इस
एक्सिस में प्लॉट करेंगे। अगर वो उस डिसीजन बाउंड्री के लेफ्ट पे है तो हम उसे बिनाइन कह देंगे, और अगर वो डिसीजन बाउंड्री के राइट पे है तो हम उसे malignant कह देंगे, right? And this result can be false as well, because you already see, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक रेड क्रॉस बिनाइन वाले केस में भी है और एक ब्लू सर्कल malignant वाले केस में भी है, वाली साइड पे भी है, right? So that basically means that machine learning is a type of system that tries to do its best to achieve good results, but it does not guarantee anything like that. क्योंकि ये कोई exhaustive method नहीं है. Just focus on what I've said. Because it is not an exhaustive method, it does not guarantee correct results always. All that it does is it tries to do its best. And like when we are training machine learning models, we like try to improve its accuracy to the maximum possibility, and like also in a way that it should be able to predict new things in future. So when I say that it cannot guarantee any solution with 100% accuracy because it's not exhaustive, that means कि इसके पास ये सलाहियत नहीं होती कि ये तमाम मुमकिन चीज़ों की जांच कर सके। जैसे हम आम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें पता होता है कि ये किन किन केसेस को टच करेगा, किन को नहीं करेगा, राइट? सो मशीन लर्निंग ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि हर पॉसिबल चीज़ को डायग्नोज कर सके। सो ऑल दैट वी आर डूइंग इज we are saying, okay, learn it yourself and try to learn it as good as possible the way we learn. So we cannot guarantee these things about ourselves, that what we learn is 100%, right? Similarly, we cannot guarantee about machine learning algorithms that they can be 100%. So in summary, supervised learning is that it learns from being given the right answers. You know the inputs and you know the right answers. Usually we represent inputs by X and output by Y, right? And within supervised learning we have talked about two further things: regression and classification. So in regression we predict a number, a quantity, and there can be like infinitely many possible outputs, right? So that is called regression. And the second type of supervised learning that we talked about is classification. So in classification we have categories to predict, and usually the number of categories are small. They can be like large categories as well, but usually they are small categories that we tend to predict. Okay, any questions so far? No question? No question? That's a bit sad. मैंने सोचा आज आप बहुत तैयार हो के आए होंगे, मशीन लर्निंग पढ़नी है, so like let's be ready, let's have lots of questions in our mind bubbling. सारा समझ आ गया, that's good, अच्छी बात है। Okay, तो आपकी like career aspirations क्या हैं? How do you see machine learning taking you forward? How many of you like feel like that, okay, yeah, machine learning is something that we really need to learn and maybe we can develop our career in machine learning? Any thoughts? कोई थॉट्स नहीं? क्यों भाई, बहुत काबिल। इंशाल्लाह कोशिश करें बेहतर करने की। क्या करने की? बेहतर करने की इंशाल्लाह। तो क्या करना चाहते हैं आप आगे? इंशाल्लाह
statement